कोल फील्ड आप आ रहे हैं क्या इसमें 45 में फॉर पिटीशन ठीक है चलिए इशू नोटिस करिए इशू नोटिस फॉर इंटरमीडिएट अरे नहीं चार्जशीट में इंटरमीडिएट नहीं कोई रूल्स तो फाइल किए नहीं जो ये बता शॉर्ट टाइम हाँ ठीक है नोटिस इज वेव्ड बाय श्री अजय एविडेंस आपके साथ माय लॉर्ड शुभ नाम बताइए आप अजय तिवारी Ajay Tiwari. Let reply be filed within 2 weeks, pointing out as to whether mines manager has authority to issue charge sheet to the petitioner or not. List in the week commencing 13 फरवरी 2023. ओबलाज सीरियल नंबर 79 None for the petitioner. Shri Saurabh Soni, learned counsel for the state. Readings are complete. As nobody is appearing for the petitioner, petition is admitted for final hearing. List in part B of the cause list for final hearing as per its seniority and done. सीरियल नंबर 80 सीरियल नंबर 80 श्री ईशान सोनी Petitioner of the pharmacist were working in the jail department, my lord. They were given the benefit of the 6th pay commission, my lord, earlier, my lord. In the 7th pay commission, my lord, the order was passed, my lord. Will kindly see page number 29, my lord. So, my lord, Lok Swasthya and Parivar Kalyan, my lord, Bhopal Gas Raj, Chikitsa Shiksha, Ayush and Kambag, my lord, the pharmacists working in these departments were given the benefit, my lord. And my lord, their pay scale was same, my lord. Only there was a difference in the grade pay, my lord. So grade pay from 1900 to 2400 was कौन से increased. विभाग का है ये My lord, jail department, my lord. नहीं आप जेल डिपार्टमेंट Yes, my lord. आप पेज 29 पे क्या दिखा रहे My हैं lord, page number 29, my lord, last table, my lord. वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का है My lord, for all the departments, my lord. Oblique, my lord. नहीं ऑब्लिक पढ़िएगा ना इसको प्लीज लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ऑब्लिक भोपाल गैस राहत Yes, my lord. ऑब्लिक चिकित्सा शिक्षा ऑब्लिक Oblique आयुष ऑब्लिक श्रम my विभाग lord. आप जेल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है My lord, they did not give it to us, my lord. तो That we have moved it. उन्होंने जवाब आ गया क्या My lord, their return has come, my lord. In fact, my lord, 21/4, my lord, has directed the Director General Prison, my lord, to file their affidavit, my lord, with regard to the, my lord, if the pharmacists are performing the same function, my lord, why they should not be given the benefit of the grade pay. आपने फाइल कर दिया क्या Yes, my lord. 21/4/2022. एफिडेविट आ गया Yes, my lord. कहाँ पर है? And my lord, along with the affidavit, my lord. अरे ये रिटर्न के बाद आया है Yes, my lord. Yes, my lord. Return की बात है. ये क्या कहा इसमें आपने My lord, see, paragraph number 3 में kindly see. आप प्लीज पढ़िए Pharmacists working in the department of jail are not equally and similarly placed to the pharmacists working in the department of public health and family welfare, my lords. Principle of equal pay for equal work has different application and cannot be construed to be a fundamental right. चलिए इसको सुनेंगे फिर लगा दीजिए रीडिंग्स आर कंप्लीट My lord, नेक्स्ट वीक में लगा रहे हैं इसको सुनाइएगा my lord. लिस्ट ऑन सत्ताईस जनवरी 2023 Oblique, my lord. और फाइनल हियरिंग पर हियरिंग बस Oblique, my lord. सीरियल नंबर 81 श्री अभय पांडे 81.2 Madam, today we are filing the application for taking document on record in this case. लिखिएगा श्री अभय पांडे सबमिट्स
The petitioner is filing an application to take documents on record. Full stop. Let the same be filed during the course of the day. If respondents so desire, they may file reply to the application within 2 weeks. List thereafter. चलिए. Time for the respondent number 4 and 81.2 में आपका 81.2 में आपका नाम डाल दीजिएगा. श्री अरविंद सोनी. अरविंद सोनी for respondent number 4. चलिए. Okay. Serial number 82. Sri Rajesh Kumar Soni. और सुनिए, ये इंक्रीमेंट वाले केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ, है ना, लार्जर बेंच डिसीजन. कल भी किए हैं, 2-3 निकाल लीजिएगा, कर दीजिएगा. आईडी कल पिटीशन डिस्पोज ऑफ. जो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने वाले केस हैं वो वाले 82, 82.1. Serial number 83. None for the petitioner. My lord, in this case, my prayer would be that if it could be taken after 2 weeks, because similar matters have been reserved and heard by the coordinate bench. None for the petitioner. Shri Aditya Khandekar for respondent number 3 submits that let this matter be taken up after 2 weeks, as the coordinate bench has already heard and reserved the similar matters. On his request, list this case after 2 weeks. Serial number 84. Sri Dilip Kumar Pandey. None for the petitioner. Shri Shivam Hazare for the state, as nobody is appearing for the petitioner. जवाब अगर आ गया, Reply is filed. and pleadings are complete. List this case for final hearing and due course. And part B, reflecting the case in part B of the cause list. Serial number Petition is admitted कर लीजिए. Serial number 80. As per its seniority and term. Hello, in this matter, I'm praying time to file rejoinder, my lord. देखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइए. Devanshu Nandi. देवांशु नंदी prays for time to file rejoinder. My lord, On his request, 2 weeks time is granted. इसमें एक निवेदन है, and we are also challenging the inaction of the respondent and not releasing the leave encashment. We are entitled. इनके reply में इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, my lord. ठीक है, आप rejoinder file करिए, देखेंगे. इनका रिप्लाई ना हम बना सकते हैं ना आप बना सकते हैं. आपको तो फिर भी कुछ एक्सेस हो सकती है बनवाने में. Highly obliged, my lord. Serial number 86. Sri VDS Chauhan. My lord, in this reply is not filed. लिखिएगा श्री VDS Chauhan for the petitioner. Shri Shivam Hazare prays for and is granted 4 weeks time to file reply. सभी केस में एंट्री में ऑर्डर बाकी 2 महीने. है? एक केस में एंट्री में ऑर्डर बाकी 2 महीने. अब ठीक है, इसमें एंट्री माउस पे कंटिन्यू कर देना, इसमें नहीं है उसको मत करना. चलिए. Serial number 87. In this matter, we have filed the reply, Miller. I'm waiting for. We have not received the reply. Let copy of reply be supplied to Shri Ronak Yadav during the course of the day. Let rejoinder, if any, be filed within 2 weeks. List after 2 weeks. I'm grateful. Serial number 88. Arvind Kumar Srivastava. None for the petitioner. Reply आ गया? No, my lord, reply is not. Reply is awaited. Shri Shivam Hazari prays for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Serial number 89. Ram Naresh Vishkarma. Reply ये wait, lord. Reply awaited. क्या मैटर क्या है? Lordship, recovery क्या है after retirement, lordship? Excess payment का recovery. Shri Ram Naresh Vishkarma for the petitioner Shri Shivam Hazari. किसका कौन है respondent? My lord, cooperative union is this.
नहीं नहीं नहीं, नोटिस इश्यू होगा कि नहीं हुआ अभी? नोटिस हो गए लॉर्ड दे रही स्पेशली कर देते हैं। As per office report, notices have been served on the respondents number 1 to respondent number 7, but nobody is appearing for the. लास्ट टाइम लॉर्ड से इन्होंने टाइम लिया था 4 सप्ताह का टाइम ग्राउंड फ्लोर 12/9/2022 को। कोऑपरेटिव यूनियन कहाँ है ये? ज्योत्सना है ना ये? यस मैम, ज्योत्सना स्वामी मालो, हाँ, इसमें तो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, कॉज लिस्ट सेज दिस। गलत लिखा हुआ cause list में गलत है, स्टेट ऑफ एमपी है। स्टेट ऑफ मालो, State is represented, let reply be positively filed within 4 weeks. List in the week commencing 13 March 2023. मालो, cause list may also be मालो registry में, because मालो we were not even given the file मालो। Serial number 90, Chief Pradeep Kumar Navelia versus Raj Chaudhary. Matter will be taken up in the next week. क्या हो गया? Lord Senior needs to argue his out of station today. आप तो हैं, क्या मैटर है ये? Lord, so I'm challenging the impugned order whereby my claim before the tribunal has been rejected. Lord. तो चलिएगा श्री, अगली बार आप बहस करिएगा। प्रवेश नवेरिया prays for time to study and argue this case on the next date. On his request, list this case on 27 जनवरी 2024। रिकॉर्ड आ गया ना? हाँ, ठीक है। Serial number 91. Please, my lord, the reply of the respondent number 1 to 4 has been filed, but the private respondent is neither represented nor his reply is filed because my relief what I am claiming is against him. I'm challenged the सर seniority. हुआ कि नहीं हुआ? Sir, पहले हो गया है, my lord, the notices सर हो गए ना, उसके बाद में उनका वेट थोड़ा ना करेंगे। my lord, the notices were paid on 10/3/2022. एक बार रिपोर्ट देख ले रहे। रिस्पोंडेंट नंबर 5 treated as served अगली रिपोर्ट, ठीक है। अब आपको रिजॉइंडर वगैरह फाइल करना हो तो बताइए, नहीं तो बहस करें। I'll file the rejoinder, but there is one more thing which I want to point out. My lord, we have filed one IA for initiation of a contempt proceedings against the respondents, my lord, for non-compliance of the order dated 9/3/2022. For a moment, if my lord, 9/3/22 बताइए। yeah, my lord, may see the order 9/3/2022. My lord, may I read it, the operative part? My lord, I'll read from the 4th paragraph. Learned counsel for the petitioner submitted that respondent number 5 is junior to the petitioner. In the seniority list, the petitioner has been shown junior to the private respondent number 5. As per office memorandum dated 3/7/1986, seniority of direct recruitees and promotees have been fixed. As per clause 2.2 of the aforesaid memorandum, promotions are made on the basis of selection by a DPC. The seniority of such promotees shall be in order in which they are recommended for such promotions by the committee. Petitioner was promoted with effect from 5/1/1996, which is evident from the impugned order dated 7/2/2022. As an interim measure, status quo in respect of petitioners and private respondent number 5 shall be maintained by the parties with regard to seniority list issued on 11/3/2022 till next date of hearing. In the meanwhile, the learned counsel of petition directed to bring on record the office memorandum dated 3/7/1986. We brought on record the office memorandum. Now, my lord, we filed an IA wherein the respondent number 5 has been promoted to the post of command. कब promote? My lord, that if my lords may have a perusal of the IA which we have filed, that is dated 2 IAs. My lord, the order by which he has been promoted is 30/9/2022, which is annexure A2, my lord. In the अब इसको फिर से पढ़िए ऑर्डर को जरा। ये जो ऑर्डर है जिसकी आप कंटेम्प्ट बता रहे हैं, इसको दोबारा पढ़िए। the operative part. ऑपरेटिव पार्ट नहीं, लर्नेड काउंसिल से। Seniority list, the petitioner has been shown junior to the private respondent number 5. Yes. उसके बाद में उन्होंने कहा as an interim measure, the status quo in respect of the petitioner and private respondent number 5 shall be maintained by the parties with regard to the seniority list. तो seniority list में वो ऊपर है, आप नीचे हैं, तो उसके जो consequences होंगे वो follow होंगे। The technical नहीं technical नहीं भाई, जो contempt में जो लिखा है वो पढ़ा जाएगा। मतलब that's true, मतलब that's true. In fact, I would have clarified. आइए हमें खारिज करना है कि आप withdraw आप एक बार सुन ले, finally सुन ले। सुनेंगे नहीं, वो केस तो सुनेंगे जब आपका रिजॉइंडर आ जाएगा। आज तो ये बताइए कि आपकी आईए कंटेम्प्ट की खारिज करना है, क्या विड्रॉ करेंगे? मतलब अगर आपके हिसाब से तो वो तो खारिज होने वाला है। That is no risk. मैं एक चीज बोल, I'll just point out one thing. The grievance why we filed this petition, it's a second round of litigation. Why we filed it?
फाइनली बहस करना कब करोगे बताओ? मैं एक बार से बोल देता हूँ सर, उसके बाद आप जो डेट देंगे मैं आदमी करता हूँ। बस आई जस्ट वांट टू, मैं डेट नहीं दे रहा, मैं तो आज सुनने को तैयार हूँ। आपको अगर रिजॉइंडर फाइल करना है तो कर दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। हम कर देते एक शॉर्ट टाइम, एक हफ्ते का। हाँ लिखिएगा। श्री सौरभ सुंदर प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ आईए। कौन सी आईए है? मतलब दैट देन आई विल हैव टू विथड्रॉ बोथ द आईएस माय लॉर्ड। हाँ देयर आर टू आईएस नंबर 13548 13548 and 13549 today 22. Next. He prays for 2 weeks. Same are dismissed as withdrawn. Next. He prays for 7 days time to file rejoinder. Let rejoinder be filed within 7 days. List in the week commencing 30 January 2023. इंट्रीम ऑर्डर में भी मतलब मैं क्या उसका कुछ सेंस ही नहीं, बिकॉज माय एंटायर पिटीशन इज बेस्ड ऑन ठीक है, लेकिन उस इंट्रीम ऑर्डर का कोई मुझे तो अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। I should have modified it on a very fair statement. 30th of January, my lord, week commencing 30th. बोलो आइटम नंबर 82 मैं प्रोजेक्ट में भी मार्क कर। तो क्या कहाँ चले गए थे आप? अच्छा डाल दीजिएगा 82 में कल। सर उसमें एक बात तो रिव्यू डिसमिस हुई है सर सुप्रीम कोर्ट में। वो सब नहीं, इंक्रीमेंट है ना, वो इट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फुल बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट। वही ऑर्डर करने के लिए कहा है बस, हम डलवा देना उसमें इनका दोनों Serial number 92. That reply could not be received. But I am taking 4 weeks time to file reply. Also time to file reply. देखिएगा। श्री संतोष कुमार पाठक लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज फॉर स्टेट, श्री सार्थक नेमा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 and 5 learned counsel for the respondents prays for and are granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. In the week commencing 20 March 2023. Serial number 93. Shri Manoj Kumar Chansoria. They may be directed to file a reply positively because my fixation is withheld by the department. 4 weeks time to file reply. List in the week commencing 27 अरे मैं फरवरी से कहाँ पढ़ 27 फरवरी 2028 ऊपर वाले को भी 27 फरवरी 2028 करिएगा। IR में IR if any to continue. Serial number 94. My large data of hearing this animal could directed to respondent file additional reply. Time to file additional reply, my lord, because 2 weeks time to file additional reply. List in the week commencing 13 फरवरी 2023. By way of last indulgence कर देना। चलिए। Serial number 95. Serial 95. None for the petitioner. reply filed. फाइल कर दिया आपने? Yes, ma'am. क्या है इसको? इसमें क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलराइज नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट था वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल। Readings are complete. मैडम का नाम डाल के none for the petitioner, इनका नाम डाल के readings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing as per its turn and seniority. Serial number 96. Please, your lordship. Lordship, in this petition, reply is awaited. Shri Ankit Chopra is a proxy. Ankit Chopra for the why proxy भाई? Sir, actually, मैं वकालतनामा is not. कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शन आगे रिप्रेजेंटेशन उनका डिसाइड कर दिया था मालूम है? रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर दिया था इनको। हाँ। ये शख्स दिखाइए। उनकी रिप्रेजेंटेशन की थी मालूम, इनको कम्युनिटी का लाभ पहले से मिल रहा है, ये मांग रहा है मालूम की आप इसको चैलेंज करिएगा। ये हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी डिसाइड हो गया। ठीक है अंकित जी। अंकित चोपड़ा फॉर द पिटीशनर श्री
Jitendra Srivastava, learned penal lawyer, submits that petitioner's representation is decided by the District Education Officer, Jabalpur, White, order dated 12/1/23. So if petitioner has any grievance, he may challenge this order in appropriate proceedings. Stop. Accordingly, Shri Ankit Chopra prays for withdrawal of the petition with aforesaid liberty to challenge the impugned order, to challenge the order dated 12/1/2023 if so advised. In above terms, petition is disposed of. ये ले लेना 12/1/23 को रिकॉर्ड ले लेना. Procedure number 97. In this case, I'm praying for time. Shri Prathak Nema for the petitioner. Shri Jitendra Srivastava, learned penal lawyer, prays for and is granted 4 weeks time to file reply. List in the week commencing 27 February 2023. Okay. Procedure number 98. In this case, I'm praying for amended petition file करी तो उनका reply देना है. None for the petitioner. Shri Jitendra Srivastava prays for and by way of last indulgence granted 4 weeks time to file reply to the amended petition. List in the week commencing 20 February 2023. Procedure number 99. Procedure number 99. Arvind Kumar Chokshi. 99.1. Krishna Kumar Amurthy. I am appearing on 99.1. क्या है regularization? The matter is related to regularization matter. The claim of petitioner has been rejected. आप किस कहाँ पर किस विभाग के हैं? PWD पे. ठीक है, तो जवाब आ गया. जवाब आ गया. Rejoinder file करना है. Next week. हम लिखिएगा please for 7 days time to file rejoinder. List thereafter. Procedure number 100. Service Parik, Shri Santosh Kumar Mishra. 100. I am telling lordship to the petition lordship. The order and circular lordship issued by the state government, that is annexure P1, P2 and P3 lordship. Three annexures are under changing lordship. P1 lordship is the circular lordship 18/5/2012 lordship. By which lordship there are two, the Guruji eligibility examination were conducted lordship. For the Guruji lordship and as well as the instructors of the non-formal slot को challenge कर रहे हैं. lordship. ये इसमें हुआ ये कि इसमें दो क्लॉजेज हैं. एक 4.1 में ए पर पेज नंबर 15 पर देखें. पेज नंबर 15 पर जी पढ़िए. शिक्षा गारंटी शाला गुरुजी हेतु नियुक्ति लॉकिंग पर पेज नंबर 15 पे शुरू से शिक्षा गारंटी शाला गुरुजी हेतु नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंध. नियुक्ति आदेश या पालक सो एंड सो पूर्णमति से मिलान करें. 1/1/98 के बाद नियुक्त गुरुजियों के नाम की पुष्टि जिला EGS समिति की बैठक की कार्रवाई विवरण बैठक के आधार पर उसके उपरांत जारी निर्देश आदेश स्वीकृति से की जाए. नियुक्ति अनुबंध दिनांक. दिस इज इम्पोर्टेंट सर. वर्तमान में कार्यरत ऐसे गुरुजी जो शासन के पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक 19/7/2005 के पूर्व से नियुक्त हो. निरंतरता नियुक्ति अनुबंध की दिनांक से जो कि 19/7/2005 के पूर्व की हो से वर्तमान तक नियमित मानदेय प्राप्त किया हो. ऐसे गुरुजी संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 में नियोजन के पात्र होंगे. शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरुजी को चयन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं कि सेवा निरंतरता की पुष्टि संबंधित विकास खंड स्रोत केंद्र जिला शिक्षा केंद्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति और मानदेय सत्यापन पत्रक से की जाए. इनके लिए जो गुरुजी हैं उनके लिए 2005 के पहले की नियुक्ति होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए. मींस ऑन द डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ गुरुजी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, जो गुरुजी योग्यता परीक्षा को ये पात्रता परीक्षा उसको पास करने की दिनांक तक कार्यरत होना चाहिए. ये है.
और now lordship may kindly move to the second part, that is on the second page, page number 4 पे देखें, internal page number, इसके ठीक बैक में औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र के अनुदेशक पर्यवेक्षक के हेतु एग्जामिनेशन वाज द सेम फॉर बोथ द कैटेगरी। एक ही एग्जामिनेशन हो रहा है, एक ही कंडक्टिंग बॉडीज है, एक ही पेपर है, दोनों चीजें औपचारिक उनके लिए लॉर्डशिप नियुक्ति दिनांक अनुदेशक व पर्यवेक्षक के प्रकरण में जारी नियुक्ति आदेश किसी भी स्थिति में 21 अप्रैल 1999 के बाद की नहीं होना चाहिए। निरंतरता आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक पीए आयुक्त स्वयं दिनांक 22 अप्रैल 2000 तथा स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक के अनुक्रम में औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र योजना समाप्ति की तिथि भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न होने के कारण औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों की सेवा अवधि की निरंतरता से गणना करने हेतु 31 मार्च 2000 को अथवा 31 मार्च से 29 अगस्त 2000 के बीच की किसी भी दिनांक को एक वर्ष पूर्व से सतत रूप से कार्यरत रहा हो तथा मानदेय प्राप्त किया हो। मीन्स इसमें सर उन्होंने ये कर दिया है कि जो औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र के अनुदेशक और पर्यवेक्षक हैं उनको 31 मार्च 2000 से लगा करके 31 मार्च 29 से 29 अगस्त 2000 के बीच किसी भी दिनांक में कार्यरत रहे हों और एक वर्ष पहले से कार्यरत रहे हों, ये इन्होंने कंडीशन लगाई है। लॉर्डशिप मेरा निवेदन ये है इसमें कि हमने ये परीक्षा हम गुरुजी के रूप में कार्यरत रहे कब से कब तक जी। हम हमारा ये सर्टिफिकेट भी है, पेज नंबर 21 पे देखें P4 निरंतरता प्रमाण पत्र राजेश कुमार प्रजापति नियुक्ति 17/12/98 से 31 मार्च 2000 तक नियमित रूप से कार्य किया, नियमानुसार उक्त अवधि का मानदेय प्राप्त किया। हमने इसके बाद एग्जामिनेशन यहाँ क्या कहा गया था, पेज 15 पर फिर आइए जी। 98 के बाद नियुक्त होना चाहिए, 98 के बाद नियुक्त होना चाहिए, 2005 से पूर्व होना 2005 से पूर्व होना चाहिए, 2000 पूर्व से वर्तमान तक मानदेय प्राप्त। दिस कंडीशन आई एम नॉट फुलफिलिंग एंड देयरफॉर अगर आप रिवर्स पेज पे चले, इस कंडीशन को आप चुनौती दे रहे हैं निदेशकों के लिए, उसमें भी है कि 31 मार्च से 2000 को अथवा 31 मार्च से 29 के मध्य किसी भी दिनांक के एक वर्ष पूर्व से ये हम कंडीशन पूरी करते हैं। एक सेकंड दिखाए ना जी, कहाँ है सर्टिफिकेट आपका? ये सर्टिफिकेट पेज नंबर 21 पे देखिए। अच्छा जी, तो ये आपका कहना है ये डिस्क्रिमिनेटरी है? डिस्क्रिमिनेटरी है। बताइए। ये लेक्चर P5 पे हमने लगाया मरोड़। P5 की R5? R5 सॉरी, R5 पे वही हमने कहा आप P5 कब से लगाना? मरोड़ R5 पे इसमें लास्ट पैरा में हमने लिखा है मरोड़, ये लास्ट पैरा में उपरोक्त आधार पर श्री राजेश कुमार प्रजापति निवासी खमतरा श्री नवंसो की नवाब खान निवासी गुरुजी के पद पर नियुक्तियां नियमानुसार नहीं थी। नहीं ये इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो चैलेंज कर रहे हैं उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। चैलेंज ये कर रहे हैं ये कि आपने सेम टाइप के इंस्टीट्यूशन में कार्य करने वाले दो भिन्न भिन्न पदधारकों को यथा गुरुजी एंड अनुदेशक इंस्ट्रक्टर्स को आपने अलग अलग कट ऑफ डेट डिसाइड करी है, इससे इनको प्रेजुडिस हुई है। इसका क्या उत्तर है? इसका तो उत्तर इस लिखने में नहीं है, इसको एडिशन रिटर्न फाइल कर लिखिएगा। श्री परेश Arik, learned counsel for the petitioner. Shri Jiten Shrivastava, learned penal lawyer for state. Next, grievance raised by the petitioner is that School Education Department of Madhya Pradesh government had issued circular dated 18/5/2012 in regard to appointment of Gurujis who were working in Shiksha Guarantee schools, bracket में EGS, so also for absorption of
instructors oblique supervisors working in formal education centers. Full stop. Reading from para 4A. 4E है ना ये? On 4A on page 15, it is pointed out that two different cutoff dates have been prescribed for the instructors oblique supervisors and that for the Guruji. And this anomaly has resulted in denial of appointment to the petitioner. Full stop. State authorities have not filed reply to this specific plea. Full stop. Let a specific reply be filed by the state authority under the personal affidavit of the district project coordinator, district education center, personal affidavit of respondent number 2 within 4 weeks. List in the week commencing 20 February 2023. Serial number 101, Shri Madan Singh. इसमें 16/6 को डायरेक्शन सर ट्रायल डिसाइड करने को 6 मंथ के जी उसके लिए जाना है। PUD received from the learned special judge NDPS Act. Schedule is cryptic. No details have been given that after receiving directions in MCRC 22692/2022 passed on 16/6/2022, what steps were taken and how proceedings were drawn by the special judge. Full stop. Special judge Shri BL Prajapati has also not mentioned that how much time is required to conclude the trial. Full stop. Thus, such cryptic PUD deserves to be rejected and is rejected. Full stop. It is observed that learned principal district judge, district and session judge are simply acting as a post office and forwarding the PUDs to the deputy registrar of the oblique registrar of the High Court without taking this fact into consideration, whether PUD has been properly written or not. Full stop. This practice needs to be curbed. Full stop. Directions be issued to all the principal district judges that they are not required to act as a post office, but they are required to guide their judges to how to write PUD, giving specific details. Full stop. Thus, PUD being cryptic is rejected. Fresh PUD along with necessary details be called for within 7 days and put up for consideration before the court. Serial number 102, Shri Sanjay Kumar Patel. PUD sent by learned 11th additional session judge Bhopal is taken into consideration. Full stop. By PUD dated 6/12/22, learned 11th additional session judge Bhopal has sought 3 months time to conclude the trial. On his request, 3 months time is granted. The trial will be now concluded on or before 31st March 2023. PUD is disposed of accordingly. Serial number 103, Shri Mahin Pateria. There is none for the appellant. Shri Pramod Saxena, learned government advocate, submits that case diary is available. क्या है ये? थर्ड में क्यों आ गए ये? क्या चेंज हो? मटेरियल विटनेस के बाद बोला था सर 2 मटेरियल विटनेस हुए हैं इनके, उसके बाद बस
परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। It seems that it is apprised by Shri Pramod Saxena that second application was dismissed on 1st August 2022 with liberty to renew prayer after examination of material prosecution witnesses. It is submitted that only 2 witnesses have been examined since then, and they both have supported the case of the prosecution. Yes. Therefore, there are no such changed circumstances calling for indulgence. Full stop. In view of the submissions made by Shri Naitna, as are evident from record, appeal fails and is dismissed. Shali. Yes. Serial number 104. My lords, this is the third appeal, my lords, under section 40. The first 2 were withdrawn, my lords. First was withdrawn with the liberty that after the examination of last seen witnesses, and second was withdrawn without any liberty. Certain more witnesses have been examined, my lords. In this case, my lords, there is no eyewitness. It's a complete case of circumstantial evidence. He's been arrested primarily on 2 grounds: that he was last seen. Amongst that, one of the witnesses has totally stated that he has not seen the present applicant along with the deceased, and there is one recovery of gamcha from him. And now those from the spot, there were 2 gamchas recovered. For one gamcha, there has been no inquiry. For another gamcha, which is said to be recovered at the instance of the present applicant, my lords, it was seized, and on the basis of that, he has been made as an accused. In fact, the prosecution witness number 9, he himself goes on to say that from the spot, a cycle and a gamcha was recovered, and for that particular gamcha, no inquiry has been conducted by the police. My lords, 9 witnesses have been examined, my lords. As per my instruction, 6 more are there. 3 महीने में ट्रायल पूरा करवाई. He's been in custody for 2 years, my lords. क्या हुआ? There is absolutely no material to connect him with the matter. ट्रायल पूरा करने के लिए बोलते हैं. It is Somesh Shukla, learned counsel for the appellant Kemla Yadav, after arguing at length, fairly submits that 9 witnesses have been examined. 9, as per my instructions. Only 6 witnesses have been left. In praise for withdrawal of the appeal, however, makes a prayer that trial court be directed to expedite the trial and make an endeavor to complete it within a period of 3 months. कर दीजिएगा, वो आगे लिख दीजिएगा. 3 months from the date of communication of the order. In our terms, appeal is dismissed as withdrawn. Great. Number 105. Prasad Mishra. First will application under section 439 my lordship. First हमारे पास क्यों आई है? My lordship को accuse खारिज हो चुकी है. कोई accuse उसकी खारिज हुई. क्या कहानी है बता? my lordship इसमें options under section 821-22 NDPS Act my lordship 5/1280 बोतलें हैं. Yes my lordship prosecution जो जब्ती गवाह है is not the support the आईओ को एग्जाम. my lordship इसमें मैं जब्ती गवाह था जिसके सामने पूरा केस बना. सब हॉस्टाइल हो जाते हैं, देख रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आईओ के बयान पे भी कन्विक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है. आईओ को हो जाने दीजिए. आईओ केस कर देते my lordship next week. Please for time to produce the statements of the IO list in the week commencing 23 January 2023. Serial number 106. Ravi Prakash Dwivedi. Lordship, this is first bail application. Offense Lordship initial 307. As per allegation, Lordship, present applicant along with his mother, Lordship, along with his mother, अपने फादर को मारने प्री प्लानिंग के लिए मारने गए. लॉर्डशिप एलिगेशन ये कि हमने कट्टे से वार किया, हमारी मदर भी साथ में थी. इंजर्ड एग्जामिन हो गया? नो लॉर्डशिप, इंजर्ड एग्जामिन नहीं हो लॉर्डशिप, लेकिन देखें लॉर्डशिप एज की एमएलसी देख लें लॉर्डशिप. एमएलसी बताएं. इसमें सिंपल स्मॉल बॉन्ड है और कट्टे से है कि नहीं है. इसमें डॉक्टर ने ओपाइन किया लॉर्डशिप कि
मरीज के बताए अनुसार उसका ओपिनियन कहीं भी नहीं। मरीज को एग्जामिन हो जाने दीजिए। लॉर्डशिप इसमें एग्जामिन हो जाएगा, मालूम पड़ जबड़े से गोली निकाली है सर। नहीं ये सर एक्सरे रिपोर्ट है जिसमें मतलब गले पे गोली चलाई थी तो जबड़े में फंस गई थी, फिर गोली निकाली गई सर। इसमें डॉक्टर साहब देखें, ये मेरे पास जो एमएलसी है। अरे भाई हम तो केस डायरी में देखेंगे जी 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 डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जी जी उसको देख लीजिए, वो गलत नहीं कहेंगे। जी डॉक्टर साहब इसमें क्या है स्टोरी लॉर्डशिप कि मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ। लिटिगेशन इज पेंडिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स लॉर्डशिप, और 125 अभी हमने 127 का लगाया है। यदि ऐसा कुछ, यदि मुझे मारना भी हो तो मैं अपनी मदर को लेकर साथ में क्यों जाऊंगा? ये फॉल्स एलिगेशन है। यदि गोली किसने मार दी फिर? ये गोली कहाँ से निकल आई है? उन्होंने खुद मार ली कि अपने मुंह में गोली? इसकी एमएलसी एक बात आप पेरुज कर लें लॉर्डशिप, मुझे तो ठीक है जी। ये जो बता रहे हैं सरकारी वकील साहब, मेरे पास जो एमएलसी है उसमें तो अरे भाई आपके पास से नहीं ये होता है। मेरे पास है, आपके पास तो पक्षकार सिलेक्टिव देता है। जी जी किस जारी दिखाइए भाई इनको। बॉडी ठीक है वकील साहब, श्री ऑपरेशन करके निकाल। क्या शुभ नाम लिखूं आपका? रवि द्विवेदी। रवि प्रकाश द्विवेदी, Senate Counsel for the Anshul Patkar, when informed by Shri Ajay Tamrakar that if bullet has been removed from body of the father of the present applicant, that is the victim, is for withdrawal of the application, same is dismissed as withdrawn. Chaliye. Period number 107. Sanjeev Kumar Tiwari. My lord, I am seeking a week time, my lord. Shri Sanjeev Kumar Tiwari is for weeks time to argue this case, list after a week. Applies. Period number 108. Shri Yogesh Singh Baghel. That's my respectful prayer in this case. This is second bail application on behalf of the present applicant. First bail application was withdrawn before this honorable court on dated 15th of June with a direction that the learned trial court is requested to expedite the trial. Kindly see page number 33, Lordship. As per the allegation of the prosecution story, near about 86 kg of contraband ganja was seized from the possession of the present accused and along with the other accused. अभी क्या status है? Yes, for the perusal of this honorable court, I have presented the complete order sheet since from dated 17/12 of 2021 up to the Yogesh Singh Baghel submits that trial has not made any progress. Despite directions of this court dated 15th June 2022, passed in MCRC 26709/2022. Only one witness was examined on 22/7/2022. Let explanation of the concerned special judge NDPS schedule be called for. That's it. I will draw the attention of this court. By perusal of the whole order sheet, 2 independent witnesses has been examined, and only one witness was completely examined within 6 months. And the इसीलिए तो मांग रहे हैं भाई, उनकी रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 30 जनवरी 2023। Period number 109. In this case, I prefer time case diary is not. Satyam Agarwal, Shri Ajay Tamrakar pays for time to call for the case diary. Let case diary be called for list in the week commencing 23 जनवरी 2023। चलिए। Serial number 110. Shri Siddharth Dutt. Let's repeat bail application. 7th bail application. 7th ट्रायल की क्या स्टेटस है? Change of ground miles. ट्रायल का क्या स्टेटस है? 3 witness एग्जामिन हुए हैं। बस कब से जेल में आप? जेल में हम 21/10/21 से। अभी लास्ट टाइम राकेश साहू की बेल खारिज की थी। नहीं वो तो ठीक है, मेरिट पे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ट्रायल कोर्ट में क्या चल क्या रहा है ये? सेम एलिगेशन में। अरे भाई रुक तो जाइए एक मिनट आप।
ट्रायल कोर्ट में चल क्या रहा है ये? श्री इंडेक्स नंबर A5 में Trivedi submits that trial has not made any progress. Only 3 witnesses have been examined till date. Applicant is in custody since 31/10/21. Let report be called for from the तो अंजलि पालो मैडम का ऑर्डर है पहला, एरिया क्यों लग गया ये? लक्ष्य अंजलि पालो मैडम के यहाँ का ऑर्डर है, तो छुट्टी में है और साहब का भी पावर आ रहा है। ये सब पावर आ रहा है नहीं, ये सब कहानी मत सुनाइए हमको कि पावर लगा के केस हटाने वाला काम मत करिए। सेम एलिगेशन में रुपेश कुशवाहा हुआ होगा। Office to examine नहीं, office to examine that when bail of co-accused has been dealt with by a coordinate bench, then इसमें चेंज हुआ, एक बयान हुआ होगा भाई, अब तो ऑफिस से कुछ पूछ रहे हैं। And why this case is listed before this bench merely due to filing of wakalatnama of one Shri Siddharth Dutt, whereas it is informed that arguing counsel is Ravinandan Dwivedi and not Siddharth Dutt. Out of station, Siddharth. Office to give explanation and should curb this practice of bench hunting by filing wakalatnamas of and should work out on the modalities to curb bench hunting by filing of wakalatnamas of related counsel when in fact they have no stake in the matter and arguing counsel is different. आने दीजिए, सब हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है। हमने इनडायरेक्टली सब कुछ कह दिया है। सीरियल नंबर 111 वीरेंद्र कुमार खरे श्री पराग तिवारी। क्या है, कहाँ काम कर रहे हैं ये? Petitioner has none for the petitioner. Petitioner has filed this petition claiming that he is working as a farrash and the Labour Court filed order dated award dated 28/5/2004 was in its favor. Ordered for the reinstatement of the petitioner and permanent classification. Full stop. Now, permanent classification का order किया था ना? इसमें बैक वेजेस का है, रीइंस्टेटमेंट विद 90% बैक वेजेस। हाँ नहीं, और प्लस उसकी तो आपने कोई अपील नहीं करी ना, प्लस परमानेंट क्लासिफिकेशन भी तो है। अवैधानिक छटनी है। रिप्रेजेंटेशन सर इनका पेंडिंग है, डिसाइड कर दो। एडिशनल रिप्रेजेंटेशन एनेक्चर कहाँ है ये? That is P5 page. P5 is pending before the authorities and therefore this petition can be disposed of with a direction to the respondents that will 15 दिन 60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits of the claim. चलिए सीरियल नंबर 112 बंद करके लिखिएगा। 1 week time, my lord. काय के लिए? आर्गू के लिए my lord. आर्गुमेंट के लिए my lord. आज क्या करेंगे? किस चीज का अपॉइंटमेंट चाहिए आपको? My lord, challenging order in exer P4 है my lord. किस चीज का अपॉइंटमेंट चाहिए? My lord, हमारी नियुक्ति NACL आंगनबाड़ी में हुई थी। ऑर्डर चैलेंज हुआ my lord कलेक्टर के यहाँ।
He applies for time to argue this case. On his request, case is adjourned list after 2 weeks. Chaliye. Yes. Serial number 130, Shri Om Prakash Dwivedi. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Serial number 114, Shri Sanjay Roy. ये इनको कार्य भारत में क्रमोन्नति की पात्रता नहीं है क्या? सर कार्य भारत में क्रमोन्नति की नोटिस जारी करते सर इसमें Issue notice. None. Notice is waived by Shri Piyush Bhatnagar. Let reply be filed within 4 weeks. List in the week commencing 27 फरवरी 2023. Serial number 115, Shri Kapil Parvardhan, Shri Vineet Kumar Pandey. This review is filed only because, my lord, there was clerical omission of not adding 50% growth in the calculation, my lord. It was granted by the tribunal, and my lord was kind enough to accept salary of about 13,79,674. And as per income tax slab, the income tax was deducted. My lord, the amount comes to 11,40,772. On this, my lord, 50% future growth has to be added, my lord. And if it is added, then the amount comes to 17,11,158. And after deduction of 1/3, my lord, I am referring to Rashmi Yadav. Yes, my lord. Yes, my lord. Two cases were there. One of contributory negligence has been set aside. My lord, in para 6 of the award, may kindly be seen. Para 6 of the order, the award. Order, my lord's order. My lord was kind enough to accept the salary 13,79,674 in place of 10,04,588. My lord, then the deduction tax was deducted. Total tax was deducted 2,38,902. Then 11,40,772. On this, my lord, 50% growth was to be added, my lord. My lord, he was aged 35 years. This review is filed only on the ground that due to oversight, this court forgot to add 50% future prospects as were required to be added in the light of the decision of the Supreme Court in Pradesh 80. Full stop. We submitted that if 50% is added, then towards future prospects, as age of the deceased was 35 years, man. 35 years. Then correct calculation. 35 years, 3 months. 35 years, 3 months. Then correct calculation will come on record. So we need Pandey Learned Counsel for the insurance company submits that this clerical error has crept in and it is apparent on face of record. Next para. Net income after deduction is considered at rupees 7,60,515. When 50% is added, then it comes out to rupees 11,40,772.50. When multiplier of 16 as is applied, then total pecuniary compensation will come out to rupees
1,82,82,00,000 Yes, my lord. 1,82,52,352. 360 in place of 1,03,20,875. My lord, 70,000 towards non-pecuniary and 40,000. एक मिनट रुक तो जाइए, तो सब ऐड है उसमें जी। अच्छा ठीक है नहीं, ऊपर वहीं पर वो 1 लाख मत घटाइएगा। Over and above which 1,10,000 is payable under the non-pecuniary heads. ठीक है ना? कितना आया था? 1 लाख अब आएगा लॉर्डशिप 1,82,000 पहले बताइए। 1,82,00,000 1,82,52,352. 352 plus 1,10,000. Now amount comes 1,83,62,352. लिख लिया आपने? Against a sum of rupees 1 crore 3,20,875 awarded by Learned Claims Tribunal. Tune of rupees 80,41,477 in place of 19,57,361 allowed by this court while passing ऊपर लिख लेना आपको seeks review of order dated 13 December 22 ये सब in MA number माइनस कर दिया। court fees payable है ना? Yes, my lord. I paid maximum court fees. MSCT में जो मिला उसको तो माइनस हो गया कर दिया ना, माइनस कर दिया ना, तभी तो आया कि 80,41,470 का एडिशन होगा। Other terms and conditions above terms review petition is disposed of. Obliged, my lord. Serial number 115, Dharmendra Patel. My lord, petitioner filed instant petition, my lord. My lord, as per the notification dated, my lord, 10/3/2000, my lord, the respondent number 5, my lord, having, my lord, the more than the 2 child, my lord. Therefore, my lord, he not issue notice. Notice is waived by Shri Piyush Bhatnagar. Let reply be filed within 4 weeks. List in the week commencing 27 February 2023. Serial number 117, Sanjay Kumar Agarwal, Sarthak Mehta. So this is a matter where the petition is agreed by the action of the respondent, not treating her as a regular employee of the state government, and therefore accordingly not extending all the benefits which are available to a regular employee. One of the petitioner was initially appointed on ad hoc basis in the fold of a respondent department, and she has spent more than 36 years of service. किस पद पर अपॉइंट हुए थे यार? Reader, on the post of reader, my lord, in the department of gas relief and rehabilitation. Reader मतलब But it is a sanctioned post, my lord, in the said department. reader in which institution? Gas relief and rehabilitation, Directorate of Gas Relief and Rehabilitation Center. पढ़ाने के लिए रीडर अपॉइंट किया था कि मेडिकल For medical purpose, मतलब some रीडर की पोस्ट कहाँ है आपके सेटअप में बताइए? रीडर की पोस्ट है मतलब, it has been sanctioned मतलब। बताइए कहाँ है? Lord, annexure P1 my lord. P1 page 24. My lord, I come to page number 25 my lord. अच्छा ये रीडर्स वो हैं जो कोर्ट में रीडर्स लगते थे, तो बता दीजिए ये परमानेंट सेटअप है? It is a permanent setup, my lord. Lord, in fact, my lord, in two identical petitions are also listed. Lord, in which notice have already been issued and the respondents have also filed. और फॉर द रिप्लाई और कौन सी आर्टिकल लगी हुई है बता दीजिए? WP number 4110 of 2022 and WP number 4101 of 2000. नंबर बताइए वकील साहब, आज जो लगी है। आज नहीं लगी। अच्छा लिस्ट अलोंग विद करके नंबर लिख के दे दीजिएगा। चलिए Serial number 118, Rameshwar Singh Thakur. Lordship next week कर रही है। नहीं नेक्स्ट वीक क्या होता है भाई? बताइए क्या मैटर क्या है? क्या चाहिए आपको? शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 के हैं। हाँ, उसमें क्या इनके डॉक्यूमेंट सत्यापन हुए माय लॉर्ड और इनका सूची में नाम भी आया। पेज नंबर नाम आया? पेज नंबर 51। ये प्रदीप कुमार अहिरवार, ये 38 नंबर पे है। पेज नंबर 51। हाँ ये 38 नंबर पे है, प्रदीप कुमार अहिरवार। हाँ
दस्तावेज पूरे सत्यापन हुए, सब कुछ हुआ, इसके बाद इनको बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया गया आपको मालूम है? क्योंकि पद इतने नहीं थे, जितने पद थे उतने लोगों को नियुक्ति दी गई। यही केस है ना? नहीं सर, इसमें ये बताया गया कि 45% पीजी एंड बीएड में होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। बताइए कहाँ है कंडीशन? वो कंडीशन होगी ना। कहाँ है वकील साहब? इंस्ट्रक्शन बुक कहाँ है? उसमें क्या लिखा है? बताइए इंस्ट्रक्शन बुक में क्या लिखा है? हाँ ठाकुर साहब आप बताइए थोड़ा सा सर। इनका कहना यह है कि मेरिट में स्थान प्राप्त करने के बाद भी इनको इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम था उसमें वो 45% मार्क्स नहीं थे। नहीं सर, इसमें जो एमए क्वालिफिकेशन है, तो एमए में इन्होंने इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया है कि आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है। सेकंड डिवीजन नहीं है? नहीं है। अब वो ब्रोशर में क्या कंडीशन थी वही तो पूछ रहे हैं हम। उसमें सर कंडीशन थी एमए पास होना चाहिए, ये मैंने रूल्स लगाया हुआ है। हाँ बताइए पेज नंबर। पेज नंबर 23 से स्टार्ट है सर, राजपत्र से, और 24 पे देखें सर। 24 पे ये उच्च माध्यमिक शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष जी निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, अब इसको कहीं एक्सप्लेन किया है क्या? इसमें सर नहीं आप माध्यमिक शिक्षक हैं कि उच्च माध्यमिक सर? दिखाइए कहाँ है आपका रिजल्ट? सर आपका फॉर्म कहाँ पर है? सर पेज नंबर 50 देखें सर, इसमें 50 यस जी। इसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है। इसमें 38 पे हमारा नाम है। हाँ वो तो बता दिया आपने जूनियर ने जी। इसके बाद में सर ये बताइए कि ये उच्च माध्यमिक का है कि माध्यमिक का? आपका फॉर्म कहाँ है? ये सर हमारा एडमिट कार्ड है, 39 है सर, पेज नंबर 44। चलिए इशू नोटिस to the respondents in as much as petitioner's contention is that he was a candidate for appointment to the post of Uch Madhyamik Shikshak, full stop, qualification prescribed in Schedule 3 under Rule 8 of Madhya Pradesh जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग within bracket सेवा एवं भर्ती ब्रैकेट कोर्स नियम 2018 only prescribes qualification of post graduation in the concerned subject with B.Ed or equivalent degree. Full stop. Petitioner's case is that he has been ousted because he had not obtained second division in the MA examination, postgraduate examination. Full stop. It is submitted that there is no prescription to have second division in postgraduate examination in the rules, and thus this condition is arbitrary. Next, let reply be filed by the respondents within 2 weeks. Till then, P1 may kindly be estimated. Stay क्या होगा? Sir, it is made clear that all the appointments will be subject to the outcome of this petition. All the appointments on the post of Uch Madhyamik Shikshak in biology subject, yes, will be subject to the outcome of this petition. चलिए
Serial number 119, Shri Lalji Kushwaha. Notice is waived by Shri Bhatnagar Chaldian. डिस्प्यूटेड पिटीशन चैलेंजिंग प्यून आर्डर एनेक्जर P11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपॉइंटमेंट का मैटर है। इस केस में हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 8 के खिलाफ एलिगेशन यह है कि इन्होंने नोटिस कॉल फॉर द रिकॉर्ड। ओके Serial number 120, 19 pages. Shri Anil Kumar Devji. Do notice annexer P19. The short from page 78, madam. The brief fact is that the inquiry officer has exonerated the petitioner from the charges. Thereafter, the punishment has been imposed by the authority, which has been challenged by this petitioner before this honorable court. This honorable court was that order, and liberty was granted to the respondent. Thereafter, without issuing any show cause notice, without framing any charge or allegation, or without making further inquiry, outrightly they have. Where is the order of the High Court? High Court order is the page number 64. वो आपके आदेश के आधार पर उन्होंने किया था, ये रिलेवेंट जो आपका है जिसके आधार पर हुआ था वो 68 पेज नंबर। चलिए इशू नोटिस, let reply be filed within 4 weeks. What I am submitting, my lord, by the impugned order, the recovery has imposed not only this, but the increment has also been सुनेंगे, जवाब आने दीजिए। तो वो सैलरी से जो रिडक्शन के लिए बोला है, मेरा निवेदन था कि केवल वो पार्ट जो है जो सैलरी से कटने वाला है, अभी रुक जाइए। Serial number 121, Shri Umar Tiwari. This is rate petition. Petition challenging free order P15, P14, P12. By this order, the respondent have terminated the petitioner from his services. किस पद पर थे आप? Plus the petitioner, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता. Petitioner was working as an आंगनवाड़ी कार्यकर्ता. ठीक है, इशू नोटिस फॉर द रिकॉर्ड। शुभ नाम बता दीजिए आपका। अभिनव तिवारी। अभिनव कुमार तिवारी। Serial number 122. Madam, kindly see next C7 and P10 is my representation is still pending before the authority. Number 2. प्रेजेंटेशन है सर इस संबंध में है कि सर हमारा अपॉइंटमेंट अभी 2022 में सितंबर जुलाई में हुआ था डॉक्टर के पद के लिए, और हमने पदस्थापना के लिए आवेदन किया हुआ था। सर हमारा स्वास्थ्य माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है हेल्थ को लेकर और पर्सनल डिफिकल्टीज को लेकर। छिंदवाड़ा से इंदौर जाना चाहती हूँ। यस सर। कंसीडर करें आप संभव तो petitioner's contention is that she has made a representation to the Director Health Services seeking transfer from Chhindwara to Indore on personal grounds. Full stop. It submitted that respondent number 1 and 2 shall be directed to consider the representation. Where is not opposed, 15 days is 60 days. This court has not expressed any opinion on the matter. Compassionate appointment का claim reject कर दिया इसमें। Sir, on the ground that I am married daughter and therefore as per 2.2 of the policy I am ineligible and this has been already held ultra virus. हाँ ठीक है ना, the issue notice और कोई ground ही नहीं। अरे भैया जवाब तो आने दीजिए। I'm saying it's even contumacious. Contempt है full bench के order को, वही particular clause जो ultra virus बोला गया उसी को लिख के और बोल दिया कि आप क्योंकि married। नहीं, उसमें हमारा भी 2 जजमेंट है जी, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और गुजरात को भी रेफर किया है जी। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप डिपेंडेंट थे। सर हमारा क्लेम है डिपेंडेंट है, अगर वो इम्प्यून ऑर्डर में ये लिख देते एक वर्ड कि आई एम नॉट डिपेंडेंट तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड।
लेट इट्स अ रिजेक्शन ऑन मेरिट। इसीलिए उसको आने दीजिए। वो अब कैसे होगा? अरे अब थोड़ा ना ऑर्डर में तो कहीं जवाब आने दीजिए ना गुलाटी साहब कि यहीं से अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दें। ओनली कंसीडर इन द लाइट ऑफ फुल बेंच एंड ऑन मेरिट्स। ठीक है, ऑन मेरिट्स ठीक है, मेरिट्स पे नहीं साहब, मेरी प्रार्थना थी वो कि अगर फैक्टर सारे अगर वो कंसीडर करें। जो फैक्ट आ रहा है कि साहब ये डिपेंड थे कि नहीं यार, वो तो मैं उसमें इस आदेश को मैंने पास करने के पहले अगर कुछ हुआ होगा तो वो रिजेक्ट कर इसी को बोले जवाब देना। सर मैं ये कह रहा हूँ रिजेक्ट कर देना, आप लिख दें उसमें। अरे नहीं ऐसा मत करिए, आप एक मुकदमा और नहीं दिलाना चाहते 4 हफ्ते में। ठीक है, वीक कमेंसिंग 27 फरवरी 2023 जी। नोटिस इज वेव्ड बाय श्री मानस मणि वर्मा। नंबर 124। P14 पेंडिंग है साहब, इसमें सैलरी का क्लेम चाह रहे हैं। डिसाइड करना है P14 जी साहब, पेज नंबर 30। petitioner's grievance that he has filed a representation annexure P14 addressed to the principal chief conservator of forest in regard to pertaining to payment of salary, etc. The only prayer is that this representation be directed to be decided by the competent authority as it is since 24/2/2022. So if 15 दिन 60 दिन, if not already decided, through a speaking order, this court has not expressed any opinion on the merits. Number 125. But I'm sorry, I'm waiting मतलब under conclusion कि मेरा 125 है, 124 साहब मेरे ही। हाँ ठीक है, बताइए ना 124 नाम डाल दीजिएगा साहब का। नंबर 100। उसमें साहब इशू ये था कि हमारा जो इनिशियल जो ठीक है तो कर दिया, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड ही तो कराना था आपको, बोल दिया करने के लिए। तो स्टेट ने तो साहब कर दिया है, स्टेट ने वो डिलीट भी कर दिया नैमित्तिक, हमें इनिशियल वहां से बोल दिया। तो ये तो वही तो डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जी नंबर 125। ये बताइए, एक्चुअली तो आप इसी केस के लिए वेट कर रहे थे। नहीं सब 3 है कंटिन्यू, मैं कंफ्यूज था कि 125 से। हाँ बताइए, ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है? जी नहीं ये फर्स्ट राउंड। अच्छा फर्स्ट राउंड, क्या हुआ? कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपको? सब हमें कहीं नहीं किया। बाय द इम्प्यून ऑर्डर एनेक्चर P1 respond number 3 has been transferred. His name mentioned at page 15 my lord, serial number 57, खंडवा से परिचित अधिकारी विश्रामगंज सामान बनमंडल उत्तर पन्ना जी। This is the order dated 5/10/2022 जी। मतलब I am holding the post of डिप्टी रेंजर। एक ही पोस्ट है क्या डिप्टी रेंजर की? नहीं मैं डिप्टी रेंजर हूँ। ठीक है, और चूंकि प्रमोशन हो नहीं रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको ऑफिशिएटिंग चार्ज रेंजर का डिप्टी रेंजर को दे रहे हैं, पुलिस में भी उनने कर दी। जो सभी को दे रहे हैं जी सीनियोरिटी के आधार पर। तो मालूट में काइंडली अप्रिशिएट एनेक्चर P3 पेज 18। हमें यहाँ से इनने रेंज का चार्ज देना चालू किया। पहले हमें परिक्षेत्र विश्रामगंज का संपूर्ण चार्ज दिया 2016 में। देयर आफ्टर 2019 में नेक्स्ट पेज सब ये परिक्षेत्र पन्ना बफर में हमें चार्ज दिया। देन एनेक्चर P5 मलट देवेंद्र नगर का चार्ज दिया। और इसके बाद ये P6 पेज 21 बक्सवाहा का दे दिया। और प्रेजेंटली हमें एनेक्चर P5 पेज 22 P7 इससे हमें विश्रामगंज का जहां हम अभी हैं वहां दे दिया। और ये दिया उनके ट्रांसफर होने के बाद। रिस्पॉन्ड नंबर 3 का ट्रांसफर ऑर्डर है 5/10 का। He has not joined my lord and petitioner has been my lord given charge. Now the my lord DFO has instructed to prepare charge list because the respond number 3 is coming to join the post. ठीक है, तो कितने चार्ज लेकर रहेंगे आप? नहीं साहब मैं तो अलग जंगल में एक ही तो टाइगर रहता है। नहीं इसमें साहब मेरा निवेदन ये है इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारी सब्सटेंशियल पोस्टिंग देवेंद्र नगर में थी, वहां का चार्ज भी हमारा किसी और को दे दिया। अभी कहाँ के चार्ज में है आप? अभी हम कहीं के नहीं, केवल विश्रामगंज। वो ये जो मैंने बताया तो ये अलग अलग टाइम पे है, वो एक टाइम पे पूरे कोई चार्ज नहीं है।
At present, by annexure P7, I am my lord at Visramganj. ठीक है, तो कह देंगे कि अगर जो है अब उसका तो सब वो मेरा निवेदन ये है कि ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 3 हैज पास मान लो 3 months prior. He unable to join. So नोटिस इशू करके करना पड़ेगा। तो सब स्टेटस को कर दे, बिकॉज स्टेटस को नहीं करेंगे सब फिर तो नहीं, वही तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या राइट है विश्रामगंज में विश्राम करने का परमानेंट। सब 3 ही महीने हुए हैं और रिस्पॉन्ड नंबर चार्ज है भाई, ये डिस्चार्ज तो है, लेकिन बट डिस्चार्ज हैज बीन गिवन प्रायर मतलब आफ्टर द मतलब ठीक है, उनको नहीं मालूम रहा होगा, नहीं संज्ञान में आया होगा। नहीं वो तो संज्ञान में तो था इनकी। अब वो 3 महीने बाद वो अचानक जाके वहां से जो भी हुआ कि साहब वो ज्वाइन करेंगे। वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है जी जी, और आपके यहाँ डिप्टी रेंजर है। हम डिप्टी रेंजर हो तो मैंने फेयरली आई एम एडमिटिंग हाँ, वो आपसे वरिष्ठ है। अब सब वरिष्ठ तो है, अब वो प्रमोशन हो नहीं रहे हैं तो हम तो वरिष्ठ हो नहीं पा रहे हैं कि हम सब्सटेंशियल पोस्ट में प्रमोशन नहीं हो रहा है। देयरफॉर माय लॉर्ड वी आर इतना कर सकते हैं आपके लिए कि भाई जहाँ आपकी सीनियोरिटी के मुताबिक पोस्ट खाली हो वहां पर आपको चार्ज दिया जाए। नहीं पर बिना कंसीडर कर ले, वो सीनियर है साहब, तो उनके लिए तो बेसिक ऑर्डर है। कह दिया साहब, आपके बगैर कह दिया आपको। नहीं, पर इनके रिलीफ क्लॉज में निवेदन कर रहा था। हाँ, इसमें वो मांग रहे हैं। नहीं इसीलिए मैं बोला इनको, इनके खिलाफ तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जी। इनको सिर्फ इतनी हम त्रिपाठी जी खड़े हुए ये कह सकते हैं कि भाई कंसीडर कर लिया जाए जहाँ कहीं और अन्य स्थान पर पद रिक्त हो। जी सर, इनकी सीनियोरिटी एंड पॉलिसी के मुताबिक इनको कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है, त्रिपाठी counsel for the petitioner after arguing at length is convinced that this petition can be disposed of with a direction to the respondent number 2 that since promotions are not being made in the department on account of some pending litigation, petitioner's case for charge of a higher post as he was holding prior to posting of respondent number 3 at Vishramganj be considered at a suitable place as per his seniority and in terms of the policy of the state government within 30 days of receipt of certified copy of the order. Above terms petition will be disposed of. Serial number 126, Deven Kumar Tripathi. in this case, during the effect of interim order, the respondents have transferred the petitioner वाला। बताएं प्लीज बताएं कहाँ है interim order? P8 वाला page 31। The petition pending है अभी? जी pending। And I have also filed my lord one order of division bench my lord page 33 in similar situation my lord in effect of the interim order without leave of court my lord. Petitioner submits that petitioner petition is still pending as was filed YWP 18150/2022. Interim order is still continuing. Yet petitioner has been transferred by impugned order section P1 from Bajna to social forestry Sagar, social forestry circle Sagar. Bajna to social forestry circle Sagar. Full stop. This order is contrary to the is in violation of the orders of the High Court. Under similar facts and circumstances, Division Bench of this Court in WA 1183 of 2021 has shown indulgence in view of such facts, issue notice to the respondent on payment of PF within 3 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, operation of the impugned order dated 8 September 2022 आज 4 महीने बाद वो साहब इनने बाद में वो स्टे हो गया था तो ये तो दबा के बैठे रहे। वो बाद में अभी एक हमारे उसमें व्हाट्सएप में डाला है क्योंकि इंटरम कब डाला है ये सब मैंने इसमें लिखा है सबसे दे हैव नॉट मतलब इवन मतलब कब डाला है बता दीजिए, डेट बता दीजिए। जी मैं बता देता हूँ 6/1/22 को ये सब मैंने लिखा है 5.9 में 23 को 23 सॉरी 5.9 में लिखा है मैंने।
petitioner impugned order was not given to the petitioner and was kept with the respondents and was posted on his WhatsApp on 6/1/2023. स्टे रहेगा नेक्स्ट डेट तक। I'm highly object. 27 श्री बालाजी अपील बार श्री आनंद कुमार वर्मा कहाँ है इनका सस्पेंशन का ऑर्डर? पेज नंबर 26 इसकी भी अपील है साहब। देखिएगा none for the petitioner. Petitioner is assailing order of suspension dated 4/1/2023 passed by Chief Executive Officer Jilla Panchayat Schedule. Shri Manaswani Verma submits that this order is appealable before the Divisional Commissioner. Accordingly, in view of the availability of the alternative statutory remedy, petition is disposed of with a direction to the petitioner to avail said alternative statutory remedy to appeal. If petitioner files appeal within 15 days from today, and commissioner, without adverting to the technicalities of limitations, shall decide the appeal on its own merits. Chali. Serial number 129 श्री आदित्य वर्मा Lord, this petition is also against the order of suspension, Lord. And I'm aware that the remedy under Rule 23 is available. But Lord, I can demonstrate from the facts of the case, Lord, strong prima facie case, Lord, that Lord, the order of suspension is bad and wrong. Lord, what happened this matter, Lord? Kindly, this person is holding the post of assistant engineer in the Department of Public Health Engineering. Lord, on 17/12/2022, the inspection was carried out by the in charge minister, Mr. Ram Khilawan Singh, Lord. And Lord, some villagers made a complaint that there is no water supply proper by the Nal Jal mission, Lord. In except people, Lordship, kindly see for a moment, Lord, at page 17. It says, Lord, this is the letter by the collector addressed to the executive engineer, Lord. ग्राम पिपरिया विकासखंड जिला शेड्यूल में जल जीवन मिशन का कार्य पूरे हुए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाला। दिस वाज द इशू। माननीय प्रभारी मंत्री श्री राम खिलावन जी पटेल द्वारा दिनांक 17/12/22 को ग्राम पंचायत पिपरिया विकासखंड सोहागपुर जिला शेड्यूल में जल जीवन मिशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि वहाँ रहवासियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी नहीं मिल रहा, जिससे लोगों में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया कि योजना का कार्य अपूर्ण एवं गुणवत्ताहीन नहीं है, पूर्ण कार्य के निर्माण एजेंसी को भुगतान कर दिया गया। उक्त शिकायत की जांच पर निम्नलिखित बिंदुओं पर 3 दिवस में दिस शो कॉज ऑन 3 पॉइंट्स। क्या ग्राम पिपरिया विकासखंड सोहागपुर में निर्माण एजेंसी का कार्य पूर्ण किए हुए बिना भुगतान कर दिया? यदि हाँ, सस्पेंशन ऑर्डर Lord, this scheme was already handed over, Lord, on 16/5/2022 to the Gram Panchayat, Lord. Kindly come to this, Lord, in Annexure P3. This is very relevant. P3. Yes, Lord. Lord, the work order was issued on 10/9/2022, and thereafter, Lordship, kindly come to page 20, next page, Lord. योजना का परीक्षण 15/2/22 से दिनांक 15/5/22 तक कर लिया गया है। योजना भलीभांति संचालित है। आज दिनांक 16/5/22 के उपरांत ग्राम पंचायत पिपरिया योजना से संचालन संधारण हेतु उत्तरदायी करती है। So Lord, this was already handed over on 16/5 to the Gram Panchayat, and the Gram Panchayat was managing. But because of some Lord, the problem in the Gram Panchayat, Lord, the water supply could not be made. So that has also been made specific by the Gram Panchayat in the resolution, Lord. This resolution actually P5 on 12/12/2022. And Lord, this fact was also mentioned by the executive engineer, Lord, in reply to the show cause notice by the collector in section P2. Yes, at page 18. Yes, please come. जी इसमें लिखा हुआ है कि 3 माह, लॉर्ड आई एम रीडिंग दिस 5th लाइन। उपरोक्त विश्रांत योजना पिपरिया विकास में जल जीवन मिशन का कार्य पूरे हुए बिना किया गया है। उसके बाद 5वीं लाइन में लिखा है 3 माह ट्रायल जन उपरांत ग्राम में जल प्रदाय चालू स्थिति में ग्राम पंचायत को 16/5/22 को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की गई थी। हस्तांतरण पर संलग्न है एजेंसी द्वारा अनुबंधित कार्य गुणवत्ता युक्त
पूर्ण उपरांत ही भुगतान किया गया, अभी ठेकेदार का अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। और फिर उसके बाद में ये लिखा है कि जल जीवन मिशन की अवधारणा के अनुरूप ग्राम में हर घर में जल की शेष बची हेतु सर्वे का कार्य चल रहा है। ये दूसरी, जब सर्वे होगा तब सैंक्शन होगा। और फिर उन्होंने लिखा कि वहां पे हमारे पास में सहायक यंत्री उपयंत्रियों की अत्यंत कमी के कारण भारी दिक्कत हो रही है। 3 सहायक यंत्री के विरुद्ध 1 सहायक यंत्री काम कर रहे हैं। और ये चीज सर इसमें आप देखेंगे रेजोल्यूशन ग्राम पंचायत का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नई स्कीम चालू है। ये पेज 22 का ट्रांसलेटेड वर्जन जिसमें पीछे लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संचालित पुरानी वाली बंद पड़ी। And Lordship, I have stated in my petition that the old scheme was also entrusted to the Gram Panchayat in 2008. And this was the retrofitting scheme. This was introduced in 2010 at 2020, which has been completed and handed over on 16/5/2022. So, not agar water supply nahi ho rahi, to I cannot be held responsible. And this fact has been confirmed by the Gram Panchayat in section P6 at page 23 also. Kindly see for a moment. शांता के लेख करते हुए, दिस इज एड्रेस टू पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेख करते हुए ग्राम पंचायत पिपरिया जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल में पुरानी जल का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल रहा। सुचारू रूप से संधारण एवं संचालन हेतु ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्राकलन नई जल योजना चालू है। In fact, not what happened this matter, the minister concerned, not he visited the old scheme, which was already under the control of the Gram Panchayat in 2008, and new was also handed over on 16. ये सब बातें अपील में बता दीजिए। अब खुद मेलाफाइड नहीं है ना इसमें। नहीं, मेलाफाइड सेंस में they are without application of mine. मेलाफाइड तो आपने प्लीड ही नहीं की। नहीं, मेलाफाइड इसलिए मैंने लिखा है सर, परंतु not in that word. तो इसीलिए अपील लगेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, I do admit. बस केवल एक आप देख रहे हैं कि इसमें जो Lord, I am very much aware that appeal and I also inform my client also. But what I submit, if an order is passed without application of mine, Lord, had it been consulted by the collector, because the collector recommended on the threat of the minister concerned, and he recommended for suspension, and the commissioner has placed him under suspension. Commissioner इसलिए किया क्योंकि ये गजेटेड ऑफिसर है, कलेक्टर सिर्फ क्लास 3 क्लास 4 को कर सकता है। हाँ, वो ठीक है। ये क्लास 2 है तो क्लास 1 और क्लास 2 को सस्पेंड करने की पावर कमिश्नर को है। वो कमिश्नर को पावर है, बिल्कुल ठीक है। परंतु उसमें से अगर ये वेरीफाई कर लेते कि ये 16/5 को ऑलरेडी हैंडओवर हो चुकी है और उसका संचालन ग्राम पंचायत कर रही, तो हाउ कैन ए ऑफिसर ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हैव रिस्पांसिबिलिटी? जैसे इसका आई डोंट नो, यस, बट जब पीएचई से शहरी क्षेत्र में योजनाएं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर हुई, तो पूरा का पूरा पीएचई का अमला ही उसको ऑपरेट करता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। अभी सर इसमें ये है, अभी इसका नहीं मालूम मुझे, नॉट इम्पोर्टिंग एनी पर्सनल नॉलेज, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्योंकि कोई मेलाफाइड नहीं है, अपील कर दीजिए, मैं डिसाइड करने का 30 डेज में। सर एक जजमेंट ये देख लो, दे दीजिए। पैराग्राफ 21 and 22, दिस इज जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट। इसमें बस देख लें आप कि ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट में इंटरफियर। जी बताइए। 21, 22। यस सर, पैराग्राफ 20 फ्लैग मैंने कर दिया। जी, पावर ऑफ सस्पेंशन शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन आर्बिट्रेरी मैनर एंड विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड or is vindictive misuse of power. Suspension should not be made only in a case where there is a strong prima facie case against the delinquent employee and the allegations involving moral turpitude, grave misconduct, or indiscipline, or refusal to carry out the orders of the superior authority are there, or there is a strong prima facie case against him, if proved, would ordinarily result in reduction of rank, removal or dismissal from service. The authority should also take into account all the available material as to whether in a given case it is advisable to allow the delinquent to continue to perform his duties in the office of his office, or his retention in the office is likely to hamper or frustrate the inquiry. In view of the above, the law on the issue can be summarized to the effect that suspension order can be passed by the competent authority considering the gravity of alleged misconduct, serious act of omission, or commission or nature of the evidence available. It cannot be actuated with malafide, arbitrariness, or ulterior purpose. Effect on public interest due to the employee's continuation in office is also a relevant determining factor. The facts of each case have to be taken into consideration, as no formula of universal application can be laid down in this case. However, suspension order should be passed only where there is a strong prima facie case against the delinquent, and if the charge stands proved, would ordinarily warrant imposition of major penalty, removal, dismissal from service. So, in the light of this fact, my lord,
I filed this petition, Lord, that the interference can be made by this honorable court on the ground that we are not in charge of this scheme. Both these schemes were handed over, one old scheme in 2008 and new on 16/5/2020. That has already been, and Lordship kindly see that I filed a representation against this order of suspension except PA to the commissioner, not pointing out all these facts and closing documents. So, Lord, if your Lordship is not interfering because of the availability of alternative remedy, then, Lord, under Rule 9(5)(b), Lord, that authority may reconsider my order of suspension in the light of these facts, Lord. That is under Rule 9(5)(d). Says not any order of suspension or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made it deemed to have made the order by any authority to which the authority is subordinate. So, Lord, what I respectfully submit in this matter, that in the light of these facts, Lord, prima facie case, a strong prima facie case, even the Lord, no action against executive engineer has been initiated. No action against any person has been initiated. I have been made in this matter, Lord. I am subjected to this, and it is not mentioned that a disciplinary action is to be taken against us. But minister ने किया इसलिए उन्होंने कर दिया, and collector has recommended my suspension. This fact has been mentioned. Collector का recommendation कहाँ है? देख, इसी में ऐसा impugn order में लिखा हुआ है. ये लिखा है सब पहले ही पैरा में. ये लिखा हुआ है कलेक्टर जिला शेड्यूल द्वारा पत्र क्रमांक 1600 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार माननीय प्रभारी मंत्री जिला शेड्यूल के दिनांक 17/12 ग्राम पिपरिया में नल जल योजना का निरीक्षण किया। तत्संबंध में श्री चक्रवर्ती सहायक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी को बताया गया कि ग्राम पिपरिया विकास खंड बताइए इस पे इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहाँ है, कहाँ रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं सस्पेंशन? खंडी सी पैरा 2 ग्राम पंचायत नल जल योजना की शासकीय प्रकृति 10/9/20 को जाकर 6 अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जो माननीय मंत्री जी के निरीक्षण के दौरान उक्त योजना अपूर्ण स्थिति पाई गई। इस प्रकार चक्रवर्ती द्वारा माननीय मंत्री जी को भ्रामक जानकारी देने तथा पदवी दायित्वों निर्वहन में कर्तव्य मूलक उदासीनता लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर महोदय द्वारा कलेक्टर कह रहे हैं अपने प्रतिवेदन में जी, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कर रहे हैं कलेक्टर साहब को कि ये जो है स्थिति ऐसी नहीं है। 16/5 को हो चुकी, 12/5 से लगा हुआ है उसका तो उन्होंने तो P8 is pending, we'll decide P8 so within 15 days. P8 डिसाइड कर लीजिए, थर्सडे कर देते हैं ऑपरेशन को, या P8 15 दिन में डिसाइड करेंगे आप? सर एक हफ्ते में डिसाइड करिए, एक हफ्ते में कर देंगे बस ठीक है, देखते हैं। आई विल पास ऑर्डर तक लीजिएगा। आई विल Serial number 130. This petition has been preferred against the rejection of my claim for compassionate appointment. I had applied for the post of Prayogshala Shikshak. Now, what they say is the only ground of rejection is that at the level of directorate, there is a stay operating, and therefore no appointments can be made. I possess the requisite qualifications, and in fact, I have not been given compassionate appointment. My lords. Petitioner's grievances that petitioner has not been given compassionate appointment on account of death of his father, who was working as Sahayak Adhyapak in the respondent teacher in the school education department. In the school education department, on the ground that there is a stay from the directorate on grant of compassionate appointment. Full stop. Next pair. Issue notice to the respondents. Notice is reviewed by Shri Vijay Kumar Shukla to file reply within 4 weeks. List in the week commencing 27 February 2023. Serial number 131. Abhishek Kumar Singh. None for the petitioner. जवाब आ गया आपका, आपको देना है अभी जी? इसमें सर जवाब फाइल करना है। Reply to the petition is still awaited
by way of last indulgence 4 weeks time is granted to file reply list after 4 weeks. चलिए Serial number 132. My lord, appeal Sarasya. appeal by the claimant. issue notice call for the record. Serial number 133. Shri Sanjay Seth. He sets up. This is a matter of appointment, my lord. I pray for next week, my lord. Senior is not available today. Shri Sanjay Seth, current counsel for the petitioner. Shri Ajay Tiwari. Ajay Tiwari submits that arguing counsel for the respondent Northern Coalfield is not available. He prays for time to argue this case on his request list in the week commencing 30 January 2023. It may be next week, my lord. Serial number 135. Shri Sudeep Khamparia. Arguing counsel is unavailable due to personal difficulty. This may be taken. That arguing counsel is not available due to personal difficulty. Therefore, prays for time on his request case is adjourned in the week commencing 23 January 2023. What's IR to continue? ऑलरेडी पिटिशनर यहाँ बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि पिटिशनर बीमार हैं और बीमारी की वजह से पिटिशनर हिमसेल्फ इज प्रेजेंट। Mr. Ayur Jan has to argue this matter. सीसीटीवी देख लीजिए, हर डेट में पिटिशनर यहाँ प्रेजेंट रहता है। आयुर जैन साहब को क्या हो गया? आयुर जैन को पावर नहीं है मालाड इसमें, देखो इसमें पावर नहीं है, वो बार बार आते हैं कोर्ट में। दिखाइए ना, वकालतनामा किसका है ये तो बताइए। प्रदीप कुमपरिया जी का है। आप कौन है? मतलब हम गौरव महेश्वरी, मतलब लास्ट ऑर्डर शीट देख लें। He was there, he had argued. पावर नहीं है, वकालतनामा नहीं है। This is not a good practice. Once he has argued this. May have argued. चलो आप इसको मंडे रख लें। List this case on 17 January top of the list. IR to continue. IR to continue only till 17 January. Grateful, madam. Serial number 136. Ajay Kumar Gupta. This petition is for payment of minimum pay scale. These petitioners were appointed prior to 1988 law as the daily wage of and still they daily wage क्या? Skilled labor. And number 1 and 2 is daily wages, not skilled labor, and number 3 हाँ ये रिटायर भी हो गए from 2022। फिर क्या करेंगे इनको? In persons of this circular रेगुलर वेज भाई, इनका परमानेंट क्लासिफिकेशन बताइए। ये जो 7, 10, 16 की स्कीम थी उसमें रेगुलर हुए हैं, क्या हुआ है कुछ तो बताना पड़ेगा। 7, 10, 16 के बारे ही इनको रेगुलर किया है। दैट 7, 10, 16 की जो स्कीम है उसमें उनको मिल गया। P3 की स्कीम के अंतर्गत ये P3 इज द ऑर्डर इशूड इन 2017 में। हाँ ठीक, और ये 7, 10 से 16 की स्कीम में मिल गया। फिर और क्या मिलना है इनको? और क्या मिलना है इनको? ये स्थायी कर्मी योजना जो है जी हाँ, ये 32 हाँ इसमें मिल गया इनको जो मिल सकता था। 32 आफ्टर डिस्चार्ज 32 इयर्स ऑफ सर्विस। तो क्या कर रहे हैं आप? परमानेंट क्लासिफिकेशन का कोई ऑर्डर दिखाइए, कब आएगा राम नरेश रावत? अदरवाइज तो आएगा नहीं। हाँ वो तो आए नहीं, कुछ बचा नहीं, इसके पहले तो आए नहीं। श्री महावीर प्रसाद शुक्ला admits that once petitioners have been granted benefit of pay scale in terms of the GAD circular dated 7 October 2016, no further relief can be granted in favor of the petitioner without showing that they were ever classified as permanent employee, so to entitle them for minimum of the regular pay scale in the light of the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat versus Ashwini Ray. Full stop. Withdraw करेंगे, खारिज करना है। withdraw कर लेते हैं। And we'll see if they approach for the classified classification मिलेगा। For withdrawal of the petition, same is dismissed as withdrawn। चलिए। My lord, item number 131 में भी नोटिस नहीं हुआ है। हमने क्या किया उसमें? उसमें लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी है जवाब। 19 की पिटीशन है भाई।
तो इसमें माय लॉर्ड पिटिशनर से क्वेरी 19 में इशू नोटिस कर दीजिएगा ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ बाय रजिस्टर्ड एडी बोथ विदिन 7 days रिटर्नेबल 4 weeks। चलिए ऑनलाइन Serial number 138. Praveen Dubey. Lord, by P1, this petitioner, whose substantive post is principal higher secondary school, that was issued by the state government, my lord. My lord, may come to page number 13, my lord, P1. She was given the additional charge of the post of district education officer, Panna, my lord. Page number 13. 13, my lord, 1-3, my lord. राज शासन एतन द्वारा श्री सूर्यभूषण मिश्रा प्रचार कन्या उच्च माध्यमिक देवेंद्र नगर को क्या हुआ? अब then I continue, my lord. Then respondent number, private respondent, my lord, who is a contract sub-engineer, my lord, respondent number 4. Well, initially he was given the charge of district project coordinator, my lord. I am not having any objection to that. That is an except P2. Now, my lord, P3 has been passed, my lord, may come to page number 17. Whereby the district collector, my lord, he has handed over the charge of this post of district education officer to him. My lord, may come to page number 17, my lord. और ये सभी प्रशासकीय हाँ ये सही इनका इसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमने लगाया my lord, में कम टू पेज नंबर 15 my lord. इसमें मैंने टाइप कॉपी भी लगाई है। नंबर 1 पे इनका नाम है अरविंद सिंह गौर उपयंत्री। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। ऊपर आप देखिए राज शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक सचिन सच के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान grievances that petitioner substantive post is that of principal government higher secondary school. Full stop. While order dated 5/9/22, petitioner was given charge of the post of district education officer Panna. Next, it is submitted that private respondent number 4 is a contract employee as is evident from annexure P2 dated 12/4/2013, whereby petitioner whose private respondent number 4 whose name appears at serial number 1 was appointed as sub-engineer on contract basis. Thus, it is evident that respondent number 4 has nothing to do with education. Yet, collector Panna has arbitrarily and illegally given charge of the post of district education officer Panna to the private respondent by order dated 15/12/2022. This order is cryptic and arbitrary. Full stop. Issue notice, call for let personal affidavit of collector Panna be filed in this behalf. So also affidavit of the commissioner public instructions. In the meanwhile, operation of the order annexure P3 dated 15/12/2022 shall remain state. क्या आपके यहाँ कलेक्टर लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर वो 2013 का है सर जो बता रहे हैं। 13 में सब इंजीनियर था, सब इंजीनियर से मास्टर बन जाएगा क्या? नहीं उसके बाद क्या हुआ सर? अरे भाई हमने मान लिया, उसके बाद रेगुलर हो गया होगा, चीफ इंजीनियर बन जाएगा। तो इनके खिलाफ भी कुछ गड़बड़ उपाया होगा तभी नहीं पाया होगा, लेकिन किसको दे देंगे? रेगुलर को दे सर मैं इंस्ट्रक्शन मंगा लेता हूँ सर। एफिडेविट मंगाइए जरा समझे तो। फाइल पढ़ के भी साइन करते हैं कि बिगर पढ़े साइन कर रहे हैं? Serial number 139. In this case, my lord, list in the week commencing 20 फरवरी 2023। जी इस केस में क्या बता दे? अब इसमें 18 तारीख को पिटिशनर को कॉल किया है कमिश्नर ने पर्सनल हियरिंग के लिए। इन द अर्लियर पिटिशन हैज बीन डिस्पोज ऑफ इन द डायरेक्शन माय लॉर्ड। इन्होंने सीधी के लिए ट्रांसफर मांगा था पर इनका रीवा मांगा था, सीधी कर दिया था ऑन कॉस्ट में। तो उसमें 18 तारीख के लिए इनको रिप्रेजेंटेशन 18 तारीख के बाद लगा दे। 18 के बाद मनोज कुशवाहा फॉर द पिटिशनर श्री मानस मणि वर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट सबमिट्स दैट Commissioner Public Instructions has already called the petitioner to consider his grievance on 18th January 2023. Therefore, awaiting response from the Commissioner, list this case in the week commencing 23 January 2023. Serial number 140. Shashank Upadhyay. काय का टर्मिनेशन है ये? लेक्चर P6 में इस पद से गए ये
ठीक 6 विधि सलाहकार म्युनिसिपल काउंसिल पृथ्वीपुर। 5 श्री गिरिराज सूत्रकार व इतनी तो सेवाएं समाप्त की गई हैं। हाँ? Issue notice none for the petitioner, issue notice on payment of PF by the registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. List in the week commencing 6 March 2023. Serial number 141, Neeraj Singh Chauhan. किस चीज की क्वेश्चन चाहते हैं ये? None for the petitioner cases adjourned. List after 4 weeks. Serial number 142, Anil Kumar Tiwari. None to see list after 4 weeks. My submission, my lord, ना serial number 95, my lord. वो बढ़ गया फाइनली मिले हुए। तो my lord ऑलरेडी स्टेट ने जवाब फाइल किया जो 2014 की पिटीशन का पूरा अडॉप्ट किया है my lord। 95 यस my lord। हाँ ठीक है फिर उसी के साथ लिंक करने के लिए एडमिटेड पिटीशन है 2014 my lord। 2022 की पिटीशन है भैया ये। my lord से जो जवाब दिया है स्टेट ने वो 2014 की पिटीशन को अडॉप्ट किया है। तो उसी के साथ लिंक करने का 95 वाला लिंक कर दीजिएगा बोल के। चलिए ठीक है 15,800 नंबर लिख के दे दीजिए, पर्ची पे लिख के दीजिए। my lord my presence में भी मार्क चलिए लिख दीजिएगा इसका नाम। नेक्स्ट केस Serial number 143, Anup Kumar Srivastava. Issued notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए Serial number 144. किस ग्राउंड पर आए? लॉर्डशिप इसमें कंपनी अपील है और क्लेमेंट की भी अपील है लॉर्डशिप। आप बताइए कंपनी किस ग्राउंड पर आई है? कंटिन्यूटी नेग्लिजेंसी का पॉइंट है इंडिका कार ये किसमें थे? इंडिका कार में थे। आपने क्या एविडेंस लीड करी है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए? मैंने इसमें रिकॉर्ड है नहीं है पहले तो ये देखो रिकॉर्ड नहीं है इस पर लिख लीजिएगा रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल लेट रिकॉर्ड बी कॉल्ड फॉर लिस्ट दिस अपील कनेक्टेड में लगा है। हाँ तो ठीक है ना तो सब चारों में इकट्ठा होगा। दो रिकॉर्ड है एक रिकॉर्ड है दो अपील एक साथ डिसाइड हुई। 2 रिकॉर्ड आए हैं चेक करिए। 144.2 चलिए फिर ठीक है बताइए क्या एविडेंस लीड करी है? मैंने जो इंडिका कार है वो हमारी ट्रक जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है वो इंडिका कार वो प्राइवेट है। इसमें पैरा जो है 17 में इसमें हमारा कहना है कि दोनों की 50-50% लायबिलिटी होना चाहिए इंडिका कार और ट्रक की। मैं पैरा 17 पढ़ रहा हूँ। इसी साक्षी ने व्यक्ति के दुर्घटना की सूचना थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में दिए गए अपराध क्रमांक 139/17 में 279-337-304 भारतीय दंड घन कायम किया जाकर विवेचना की अनावश्यक एक ट्रक जब्त किया गया। उस साक्षी ने दंडिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श P29 MLC प्रदर्श 30 देहाती नालची 31 संबंधित चिकित्सा एक्सरे रिपोर्ट बाद प्रभावी से लिखा गया। आवेदक तरफ से उनके लंबे प्रतिशत में कोई तात्विक खंडन नहीं आया। उनकी प्रतिवेदन में बताया कि उनकी इंडिका कार गाड़ी ट्रक से करीब 20 फीट की दूरी पर थी और ट्रक के अचानक खड़े हो जाने से 19 में कहा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है आप ही के लिए फिर कैसे होगा? ठीक है आपकी अपील गई
अब इनकी अपील सुनते हैं। 144, हम बताइए किस ग्राउंड पर है आपकी? लॉर्डशिप इसमें इन्हेंसमेंट के दो ग्राउंड है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लॉर्डशिप और अदर हेड में लॉर्डशिप। ठीक है, किस तारीख का एक्सीडेंट है? डेट ऑफ 21/5/2005। लिखिएगा, these appeals are filed by the claimants and the insurance company respectively, being aggrieved of award dated Respondent number 5. 15/11/2011, passed by Insurance company. learned Oriental. Third Motor Accident Claims Tribunal, Satna, sir. in क्लेम केस नंबर, ये बताइए 163 में कहाँ से लगेंगे ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट? मिलता है क्या 163 की अपील में? इसमें लिखा हुआ है अवार्ड में पहले पेज पर, आवेदन अंतर्गत धारा 163A मोटरयान अधिनियम। लॉर्डशिप इसमें 66 लिखा है, पेज नंबर 9 में देखें लॉर्डशिप, लास्ट पहला पैरा का लास्ट लाइन, वो टाइप पहला पेज पे लास्ट लाइन है इसमें अवार्ड में लॉर्डशिप, अवार्ड का पेज 9 जी, पहला पैरा का लास्ट लाइन लॉर्डशिप, दोनों छाती दावा धारा 166 मोटरयान अधिनियम का स्पष्ट गलती से वहां पर लॉर्डशिप टाइप हो गया। ये लिखा दोनों क्षति दावा धारा 166 मोटर अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। 166, हाँ 166 कहाँ लिखा है? लॉर्डशिप पहला पैरा है लॉर्डशिप, जजमेंट में, जजमेंट का 15/11/2011 की कोर्ट लिखा है उसके नीचे से पेज नंबर 9 में लॉर्डशिप पहला पैरा जो है ट्रायल कोर्ट का जजमेंट नंबर 66 के अंतर्गत क्या लिखा? अपील इज फाइल्ड। दोनों डेथ केस हैं क्या? दोनों डेथ केस हैं? एक इंजरी है, दूसरा वाला पहले डेथ केस को कर लेते हैं। 144 तो डेथ केस है ना, एंड 144.1 एंड 144.2 ये तीनों साथ में करिएगा, ठीक है? These appeals have been filed, being aggrieved of award इतना आ गया in MVC नंबर 209/2011 and MVC नंबर 210/2011, whereby 11 कोर्ट का नाम आ गया था ना, फुल स्टॉप। It is insurance company in their appeal has submitted that tribunal has erred in not recording a finding of contributory negligence despite the fact that claimants were traveling in Indica car bearing registration number MP19G2900 when accident took place, when car had rammed in truck number MP07G1323 from behind. Full stop. Thus, award is challenged on the ground of not appropriating the amounts of compensation between the joint tortfeasors. Next para. Shri Arubendra Singh Parihar submits that deceased is Rakesh Tripathi. Tribunal has awarded a sum of rupees 11,61,500 after accepting a fact that age of the deceased was 32 years. 32 years and he was working as एरिया फील्ड मैनेजर के पद पर था। एरिया फील्ड मैनेजर in सहारा इंडिया, सहारा इंडिया 20 पैरा नंबर 20 में। हाँ, therefore 50% is required to be added towards future prospects. Full stop. It is also submitted that tribunal has awarded only a sum of rupees, ये 1,02,000 रुपए काय में दिलाए? नहीं, 11,52,000 रुपए उसमें दिया है डेथ में, और 9,500 रुपए अदर हेड में लॉर्डशिप। ये पेज नंबर 20 में लास्ट लाइन में लिखा है। पेज नंबर 20 ऑफ द अवार्ड, जी लॉर्डशिप, लास्ट लाइन में। क्या लिखा? Has awarded छतपोत के दास रूप में sum of rupees 11,52,000 under the head of pecuniary compensation and rupees 7,500 under the head of non-pecuniary compensation. Full stop.
It is submitted that this non-pecuniary compensation will also requires to be enhanced. Next fair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record. As far as plea of contributory negligence is concerned, tribunal has discussed this aspect and has held that no evidence was led by the insurance company or the owner driver of the truck to prove the aspect of contributory negligence. Truck had suddenly braked. As a result, Tata Indica rammed into it from behind. Thus, as far as appeal filed by the claim insurance company is concerned, in absence of there being any evidence to prove the aspect of contributory negligence, deserves to be dismissed and are dismissed. Next paragraph. As far as appeal filed by the claimant is concerned, in claim case number 209 of 2011, tribunal has admitted income of the deceased 8,000 रुपए पर मंथ 8,000 रुपए कहाँ है पैराग्राफ पैरा 24 में लॉर्डशिप सेंट्रल में जहाँ वो जजमेंट कोर्ट है सरला वर्मा वाला उसके दूसरे लाइन में has accepted income of the deceased at rupees 8,000 per month. The stop and 50% is added towards future prospects. It comes out to rupees 12,000 per month. 1/4 deduction is to be made towards the living expenses of the deceased. Therefore, net dependency will come out to rupees 9,000 per month or rupees 1,80,000 per annum. Full stop. Tribunal has applied. कितनी एज बताई आपने? 32 has applied multiplier of 16, which when applied takes total pecuniary compensation to rupees 17,28,000, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 70,000 under the head of non-pecuniary compensation, and minor children of the claimant are entitled to sum of rupees 80,000 at the rate of rupees 40,000 each for the loss of parental consortium in the light of Satvinder Kaur. Thus total compensation will come out to rupees 18,78,000 in place of rupees 11,61,500 awarded by learned tribunal. Thus there will be addition of rupees 7,16,500. ने कितना वैल्यूएशन किया है? वैल्यूएशन है 10 लाख करोड़। ठीक है, तो 10 लाख पे लॉर्डशिप कोर्ट फीस वाला नहीं है, 2007 का एक्सीडेंट वाला है। ठीक है। Accordingly, this additional amount will earn 6% also, so MIS में इन्वेस्ट करा दीजिएगा, ठीक है ना? इंजरी वाला दीजिएगा। इसी में MA 1187 of 2012 is filed for being aggrieved of ऊपर सी में इतना दिस इज इंजरी केस, MA इतना इसे इंजरी केस ऐसा करके लिखिएगा। बताइए क्या इंजरी है? पैरा 26 में पैरा 26 में क्या कहा? अगले पैरे में पैरा में दिया कि आपको 20% डिसेबिलिटी है, पैरा 27 देखना। हाँ 20% विकलांगता, बाएं हाथ में 20% विकलांगता आ गई। 64 उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया है पैरा 27 के ऊपर लॉर्डशिप। करते क्या है ये ठेकेदार था लॉर्डशिप, नगर निगम में ठेकेदार। हाँ तो उससे ठेकेदार का बाएं हाथ में 20% विकलांगता से फंक्शनल डिसेबिलिटी की आई बताइए। लॉर्डशिप जो ऊपर दिया है उसका डिस्क्रिप्शन कितनी चौंतीस से पैरा 27 के ऊपर देखें। इस साक्ष्य ने व्यक्त किया है कि डॉक्टर ने जब मरीज ज्ञानंद पांडे उसके यहाँ भर्ती हुआ था, उसके सिर में चोट थी, टांका लगा था। डिसेबिलिटी फंक्शनल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। 20% को 10% माना है कोर्ट ने। 20% को 10%। ठीक है चलिए, फिर और क्या चाहिए? और ये लॉर्डशिप इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो अदर हेड में यहाँ मिला उसका कैलकुलेशन है। दिखाइए। ट्रिब्यूनल का कैलकुलेशन है।
No, it is submitted that no amount is awarded under the head of pain and suffering. Therefore, the sum of rupees 25,000 is no need 10,000. 10,000 is awarded under the head of pain and suffering, which is enhanced to rupees 25,000. Thus, there will be addition of rupees 15,000 under the head of pain and suffering. Full stop. क्या एज है इसकी? 28 years. 28 साल. अच्छा, ठीक है. Full stop. It has also come on record that claimant was working as a contractor. Tribunal has accepted 10% permanent disability and has awarded a sum of rupees 1,02,000 under the head of loss of earning capacity, but has not granted future prospects. Therefore, when future prospects are added, then there will be addition to the tune of rupees 40,800. Full stop. Thus, claimant will be entitled to total enhancement of rupees 55,800 under the head of pain and suffering and future loss of future income, loss of earning capacity future. ठीक है ना? After adding future prospects, this additional amount of 55,800 will also earn interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. चलिए next case. Lordship, kindly my appearance may be marked in MA 1051 2012 on behalf of respondent number 5. डालिए आपका नाम डालिए. Highly obliged, Lordship. लॉटरी पे EMI नंबर 1052 में 37 डेज का डिले है. इसमें डिले कंडोन कर देना भाई, जिसमें डिले हो, जिसमें डिले हो कंडोन कर देना. Grateful, Lordship. Serial number 145. Shri Aditya Narayan Sarma, Shri Arvind Singh Parhar. Insurance company's appeal on the point of the deceased was traveling as a gracious passenger in the tractor trolley. That fact was evident from the exhibit B2 FIR. He was sitting on the tractor or in the trolley? He was sitting on the trolley, my lord. ट्रॉली. ट्रॉली का इंश्योरेंस का बताइए क्या है, क्या क्या कवरेज है? आपने एम्प्लॉइज के लिए भी प्रीमियम ले लिया. इंश्योरेंस पॉलिसीज D1, वो एम्प्लॉय नहीं है सर. उनका तो क्लेम ये है कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और ट्रॉली पलट गई, वो नीचे दब गया. अच्छा. लेकिन FIR में आया है कि वो ट्रॉली पे बैठ के जा रहा था. चलिए, ट्रॉली में बैठ के भी जा रहा था, तो कोई एविडेंस आई कि उसका क्या स्टेटस था? नहीं सर, वो कोई एविडेंस नहीं है. तो क्या बचा इसमें? पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है जी. हम करें इसको. सर कॉम्प्रिहेंसिव तो है, लेकिन ये एविडेंस तो आएगी ना वकील साहब जी. कवरेज भी ले रखा है आपने 5-5 लोगों का. जी. This appeal is filed by the insurance company. 2 ग्राउंड और थे तो वो प्रणय सिटी के बाद खत्म हो जाते हैं. Being aggrieved of award dated 14/3/2013 passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal Satna in claim case number 233 of 2011, mainly on the ground that deceased was traveling in the trolley and therefore there was no coverage for the deceased as he was a gratuitous passenger in the trolley. Next paragraph. Shri Arubendra Singh Parhar, reading from the evidence, submits that no such evidence is brought on record that deceased was not covered under the policy as premium has been taken for 2+1. 2+1. 2+. Para 6 में last 2 lines follows. Insurance policies has been taken for NFPP, that is non-fare paying passengers. ये है ना इसमें नॉन फेयर पेइंग पैसेंजर्स का. जी. 150 रुपए आपने ले लिया. जी. Therefore, insurance company is not entitled to be exonerated. Full stop.
After hearing learned counsel for the parties and taking this fact into consideration, that in the insurance policy exhibit B1, there is a clear mention of charging of premium. LL क्या होता है? So legal liability under वो paid driver or last line D1. It is evident that legal liability was undertaken towards non-fare paying passengers, and a premium of Rs 150 was charged. Therefore, in terms of the policy, no illegality can be attributed to the impugned award. Calling for interference, appeal fails and is dismissed. Part of the tribunal we sent back. सर क्वांटम वाला भी है। बताया ही नहीं आपने, क्वांटम में क्या हो गया बताइए। आप इन्हें तो बोला कि प्रणय सेठी खत्म हो जाएगा। हाँ सर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 5,000 की इनकम ली है सर 2011 में। 2011 में 30% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगाया था, तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। 2011 में कब का एक्सीडेंट है? 2011 में है 15/1/2011। 15/1/2011। 15/1/2011 का क्या माना है इसको? स्किल्ड मैकेनिक 4/4/25 4425 रुपए की इनकम आएगी 11/1/2011 को। एज क्या है मृतक की? 24 साल है सर। आप 40% बढ़ जाएगा जी, वो बढ़ जाएगा, बराबर आ जाएगी जी। वो लिखा दें, तो बराबर जाएगी और डिस्मिस कर दें। Another ground is that tribunal has taken excess income of the deceased on the date of accident, which is January 2011, when minimum wages even for a skilled laborer were to the tune of Rs 4425 full stop, 25 per month. Next paragraph. Shri Arvind Parayar submits that age of the deceased was 24 years. Full stop. 40% addition was required to be made in the light of Pranay Sethi. Tribunal has only given 30% future prospects. When this aspect is taken into consideration, then there is a kind of set-off for the income which was computed by the tribunal. Okay. Thus, on such hyper-technical ground, no indulgence is required in the matter. On this ground also, appeal fails and is dismissed. Chaliye. Number 100. May I see my lord's kind indulgence? Yesterday there was a matter at item number 70 bunch matter. हाँ yes हाँ yes सर वो ऑर्डर मेरे को बताया 2012 का एक MPLJ My friend has served it out. मेरे को दिया। That is the law. Justice Jha साहब का judgment है वो। There are two more, if my lords would permit. हाँ बताइए ना। मतलब ये 146 मेरा। हाँ अभी सुन रहे हैं आपको। ये कोई है नहीं मेरे ख्याल से उनकी तरफ से। तो उसको कब के लिए अगले हफ्ते रख दें? श्री D.K. Dixit, learned counsel for the petitioner. श्री अरे D.K. Dixit साहब का नाम मत लिखिए। अंशुल दीक्षित for the petitioner, none for the respondents. On request list week commencing. अंशुल दीक्षित भी तो अखिलेश श्रीवास्तव is there. 30th January 2023. चलिए हाँ बताओ भाई, अब इस जजमेंट को देख लो आप। My lords, I have seen the judgment. My lord, it is clearly distinguishable in my case. तो एक काम करिएगा, मंडे को मुझे बताइएगा। Distinguishable. हाँ डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा, मैं मंडे को ही लिखाऊंगा इसको। My lords, so in the court itself, my lord. नहीं चेम्बर में बता दीजिएगा मंडे को। My lords, there are two more judgment. Can I give it? हाँ ले आइएगा, सब ले आइएगा, उसे बता दीजिएगा 5 मिनट, उसके बाद ही लिखाऊंगा। मैं बता दूं अभी या जब आप तभी बताना मंडे को। हाँ 30 जनवरी वाले दिन। चलिए सीरियल नंबर 147 श्री अशोक कुमार गुप्ता। None. Pleadings complete. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause as per its turn and seniority. चलिए सीरियल नंबर 148 श्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी। This matter is an application for amendment pending consideration in WP 2056/3 of 19.
इसके बाद 48.1 में थे on IA 13127 2022, an application seeking amendment in the pleadings as same is not opposed by the respondent state represented by Shri Saurabh Soni. It is allowed, let necessary correction be carried out within 7 days. Reply to the amended petition be furnished within further period of 3 weeks. List thereafter. But there's an application for dealing this matter from this one. Because in our case, when counseling was done, the only issue was as regards issuance of order of promotion. दोनों साथ में सुन लेंगे, काय को परेशान होते हैं? ठीक सर। Serial number 149. So I pray for next week. Mr. Rai is not available. Manoj Kumar Yadav. आपका शुभ नाम? Manoj Kumar Yadav. Manoj Kumar Yadav submits that arguing counsel is not available and therefore prays for listing of this case next week. On his request, list this case after a week. 149-1. हाँ, दोनों जाएंगे. Serial number 150. Shri Avdesh Kumar Singh. None for the petitioner. जवाब अगर आगे जी pleadings complete है लॉर्ड। Readings are complete. IA 333/23 is allowed. Let necessary correction be carried out within 7 days. As pleadings are complete, petition is admitted for final hearing. List for final hearing as per its turn and seniority. Chali. Serial number 151. Shri Kamlesh Kumar Dwivedi. Next week, my lord. Praise for time on his request case is adjourned. Serial number 152. Reply या better lordship. 3 weeks time to file. By way of last indulgence, 3 weeks time is granted to file reply. नाम डाल दीजिएगा. इंद्रजीत सिंह यादव. पीयूष भटनागर. Serial number 153. Shri Rakesh Singh. Month case is adjourned. जवाब दे दिया गया इसमें? नहीं सर, जवाब 2 weeks time. पीयूष भटनागर prays for and is granted 4 weeks time. 153 में 4 weeks time to file reply. चलिए. Serial number 154. Shri Sanjay Rai. दे दिया जवाब? मतलब दे दिए सर इस पर. Readings are complete. List after 4 weeks. Serial number 155. Srimati Sudha Gautam. 4 weeks time. None. Prays for 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Serial number 156. Shri Vijay Tripathi. Shri Samdarshi Tiwari. फाइल दीजिएगा जरा. क्या pleadings पूरी हैं? हाँ? Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list. Serial number 157. In this case, का डायरेक्शन था इसमें. Shri Ravin Shukla. हाँ, कितना टाइम चाहिए? 3/2022 का. By way of last, none for the petitioner. Piyush Bhatnagar prays for and by way of last indulgence granted 3 weeks time to make compliance of the order dated 25/3/2022. 21/10/2021. List thereafter. Lordship, हाँ बताइए. I am praying for item number 103, my lord. That is shown dismissed, my lord. जो लास्ट ऑर्डर शीट के अकॉर्डिंग सर एसएचओ के पर्सनल प्रेजेंस पे लगा हुआ था सर, मैं जब तक आया तो 104 आ गया था सर. तो मेरा तो बता देते आप उसी वक्त. सर मेरा निवेदन में इनको बढ़ा दीजिएगा. ठीक है सर. आई एम ग्रेटफुल माय लॉर्ड, आई एम ग्रेटफुल. 103 बढ़ा देंगे. बहुत दिन बाद साहब कहाँ जा रहे हैं मीटिंग में?